Assalamu alaikum and welcome back to Learning Safer Institute. This is me Salman, and in this video I'm going to tell you that in IELTS reading test, in IELTS reading module, which types of question you can guess the answer for when you have a very short time left behind. Before moving to the main lecture, let me tell you that I do not recommend you to completely rely on guessing. Instead, you should solve your passage very carefully and smartly. And this video is specially for the emergency cases. Now, what are the emergency cases? A question will pop up in your mind, and emergency case is the time management. What happens is that when a student does not practice adequately and in the right direction, they often find themselves struggling with the time management problem. And what happens is that when the students start solving the reading test, they start with passage 1, then passage 2, and passage 3. By the time they start solving passage 3, they came to know that they are left with very less time, so they start panicking. And I will tell you that in this particular situation what to do and what not to do. So in this situation you should completely rely on the guessing, because you are left with 2 to 3 minutes, or even some cases 5 to 6 minutes. और होता क्या है इसमें कि जब आपने आंसर भी ट्रांसफ़र करने हों और आपके पास पैसेज 3 के 13 से 14 क्वेश्चंस भी पड़े हों, तो उस वक्त आप पैनिक कर जाते हैं और फिर आपको जल्दी से जल्दी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आंसर भी ट्रांसफ़र करने होते हैं। फॉर दैट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप है जिनको आप आंख बंद करके उसका गैस लगा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन टाइप हैं जिनको आप गैस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसेज एंड पैराग्राफ पढ़ने होंगे। सो हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू 2 मेन पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चन टाइप्स you can for which you can guess the answer, and the part 2 consists of those questions type that you cannot guess the answer for. So, and at the end I will give you a relevant example from the passage by sharing my screen with you. So let's start. So as you can see, a list has been appeared on the screen. You can see uh, in the list on top there is true, false, not given, yes, no, not given. This is part 1. These are the type of question that you can guess the answer for. So true, false, not given, yes, no, not given, MCQs, match the heading. Match the heading is the nightmare for all the students. And filling the blanks volume means version 2, जो filling the blanks का दूसरा version है, in which you are required to select one answer from the given list. और वो जो list होती है, in that list you are provided with the words that are often paraphrased and the synonyms of the original words from the passage. यानी कि ऐसे words जो passage में जो आंसर होगा उसका पैराफ्रेज्ड वर्जन होगा, उसका सिनोनिम आपको दिया जाएगा उस लिस्ट के अंदर, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम दैट list and then match the sentence ending and any type of questions that allows you to choose the answer from the list. So इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई और उसमें से आपने आंसर चूज करना हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आप कैस लगा सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप है जिनमें आप गेस नहीं कर सकते। नंबर 1 पे फिलिंग द ब्लैंक, FIB। सो इसमें FIB फिलिंग द ब्लैंक वॉल्यूम 1 में होता यह है, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज और फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फिल दैट वर्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक। अब इसके अंदर आप वर्ड गेस नहीं कर सकते बिकॉज आपको उसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पे हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम पे भी अगेन आप पैसेज पढ़ के तो फिर उसको आंसर को लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड टेबल कंप्लीशन। टेबल कंप्लीशन नॉर्मली फिलिंग द ब्लैंक पे ही कंसिस्ट करता है। सो ये थे हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम रेलिवेंट एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे पैसेज 1 है। पैसेज 1, what type of question are there in passage 1? As you can see, match each event with the correct date A to F, write the correct letter AF in boxes, means you have to choose your answer from this list and write it over here. यानी कि अगर 1 का आंसर जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे, in this type of question you can guess the answer. But in only in emergency cases, I would strongly recommend you to practice a lot before giving your real exam.
So the next is match each opinion or deed with the correct person. Means कि ये जो statement है या deed है या जो भी यहाँ पे given है, ये किस किस इंसान ने कही है इनमें से, which person said this statement या have given this statement. तो ये आपने इस लिस्ट में से चूज करना है, तो इसमें से भी आप गेस कर सकते हैं. And the next one is sentence completion. Match the sentence ending. Sorry, complete each sentence with the correct ending. A to E. अब ये आपके options हैं. These are your options and these are your questions. You have to match these with this. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर 11 आप समझते हैं कि 11 का आंसर सी है या बी है, तो आपने सी और बी लगाना है, आपने पूरा नहीं लिखना. तो यू कैन गेस द आंसर फ्रॉम देयर. ओके, पैसेज 2 में देखते हैं. पैसेज 2 हमारा ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स में अगर 15, इफ यू थिंक दैट ट्रू फॉल्स नंबर 15 इज ट्रू, यू जस्ट राइट ट्रू इन योर आंसर शीट. एंड इफ यू थिंक दैट क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉल्स और नॉट गिवन, so you should write accordingly. And this question, this is answer, this is a very common question, and these are answer the short questions. As you can see, answer the questions below, choose one, no more than 3 words or a number from the passage. You have to choose or select the word from the passage, and इसमें आप guess नहीं कर सकते. सो अगेन ये हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. इसमें भी मैंने आपको बताया कि आप इसको चूज नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट वन फ्रॉम द पैसेज. एंड इन पैसेज नंबर 3 वी हैव the nightmare for all the students. We have list of headings, and in this type of question you are provided with the list of headings, and you are required to choose for each given paragraph a list, a heading. And आपने करना क्या है, सिंपली अगर बहुत आसान वर्ड्स में बताऊं कि ये फॉर एग्जांपल जिस तरह पैराग्राफ जी है, आपने देखना है कि इस पैराग्राफ जी को कौन सी हेडिंग सूट कर रही है. हम इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर, अ वीडियो ऑन दिस. You should watch my video on how to solve the list of headings in IELTS reading module. And obviously आपके पास option है, you will select your relevant option from here. And then we have MCQs. Obviously MCQs का मैंने आपको बता चुका हूँ कि you can guess the answer. अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये आपने तब यूज़ करनी है, गेसिंग आपने तब यूज़ करनी है जब आपके पास टाइम शॉर्ट रह जाए. एंड ऑफ कोर्स आपने कुछ ना कुछ पैराग्राफ या पैसेजेस पढ़े होंगे. इस पैसेज ये जो आपका पैसेज नंबर 3 है या 2 है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो उसमें रियल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर आपने गेसिंग के ऊपर रिलाई करना है. अदरवाइज आप कोशिश करें कि 40 क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम आप इसको मुकम्मल तरीके से, फुल फ्लेज तरीके से इसको तैयार करें. ओके, लास्ट वन इज अगेन द लिस्ट ऑफ कंपनी. यहाँ से आपने लिस्ट ऑफ कंपनीज को देखना है और उसको यहाँ से फिर आपने इसके क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो है उसको आंसर पुट कर देना है. सो दिस वाज ऑल. आई होप आपको इसकी समझ आई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द गिवन नंबर. मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, आप उस नंबर के थ्रू मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.